हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स। मेजरिंग थिंग्स इंक्लूडिंग लेंथ। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं आइडेंटिफाई बेस क्वांटिटीज इन एट एसआई सिस्टम, नेम द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज प्रीफिक्सेस फॉर एसआई यूनिट्स, change units here for length, area and volume by unit chain link conversion. Explain that meter is defined in terms of speed of light in vacuum. इसके key ideas क्या हैं? Physics is based on measurement of physical quantities. यहाँ के different physical quantities दी हुई हैं। Length, time and mass है। हम इनको डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स में, जो कि ये है मीटर, सेकंड एंड किलोग्राम। लेंथ क्या है मीटर, टाइम क्या है सेकंड, मास क्या है किलोग्राम। और दूसरी क्वांटिटीज़ को है कुछ है उनको हम बेस में डिफाइन करते हैं और यूनिट्स में है। These unit system emphasized in this book is the international system of unit SI. Physical quantity displayed in table 1.1 are used in early chapter standard which these standards are used in all physical measurements for both base quantities and quantities derived from them. और यहाँ पे मीटर को डिफाइन कर रहा है। मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट ड्यूरिंग ए प्रिसाइजली स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। व्हाट इज फिजिक्स? Science and engineering are based on measurement and comparison. Thus, we need rule about how things are measured and compared, and we need experiment to establish the unit for those measurements and comparisons. One purpose of physics is to design and conduct experiment. For example, physicists strive to develop clocks of extreme accuracy so that any time or interval can be precisely determined and compared. You may wonder whether such accuracy is actually needed or worth the effort. Here is one example of worth. Without clock of extreme accuracy, the global positioning system that is now vital to worldwide navigation would be useless. Measuring things. We can measure each physical quantity its own unit by comparison with the standard. We can measure each physical quantity in its own units by comparison with the standard. Unit is unique name we assign to measure of that quantity. For example, meter for length. Base quantities. The unit is a unique name as we assign to a measure of that quantities. For example, meter for quantity length. Standard correspond to exactly 1 unit of quantity, as you will see standard for length which corresponds to exactly 1 meter in the distance traveled by light in vacuum during a certain fraction of second. ये खुद ही पढ़ लेना। आगे बेस क्वांटिटीज के मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन। Base quantities. There are so many physical quantities that is problem to organize them. Fortunately, they are not all dependent. For example, speed is the ratio of length to time. We do it pick up by international agreement small number of physical quantities such as length and time and
assign standard to them alone. We can define all other physical quantity in terms of base quantities and their standards called base standards. For example, speed, for example, is defined in terms of base quantity, length and time. स्पीड है फिजिकल क्वांटिटी, इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है लेंथ एंड टाइम में एंड देयर स्टैंडर्ड्स में। ये कुछ ऐसा यूनिट्स दिए हुए हैं, उनके आगे उसने किया हुआ है कि ये इसके इक्वल है। ये टेबल में टेबल 1 में ये इसने बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट की हुई है, 3 में उसने डिफाइन की हुई है। लेंथ है मीटर, उसका यूनिट नेम है, सिंबल एम है, टाइम है सेकंड है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, मास है किलोग्राम, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरी फिक्सेस है, हमने पहले पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे। ये चेंजिंग यूनिट हमें से बता रहा है कि हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे तब्दील कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे उसने 1 मिनट और 60 को इसने 1 के इक्वल किया हुआ है। 2 मिनट कह रहा है कि 2 मिनट कितने सेकंड इक्वल होता है। उसने ये सारा स्पिन किया, मतलब है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएंगे। हम यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे लेंथ वाला टॉपिक। आज तक इतना बहुत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।